Assalamu alaikum. Good morning. Welcome to Urdu Bitcoin live channel. Um, we are going to analyze price action right now, both in English and Urdu, because a lot of big things happening right now. A lot of crazy price action happening. So stay tuned for some technical analysis in English and Urdu live right here, right now. So उर्दू के नाजरीन हम इस वक्त उर्दू इंग्लिश दोनों में जो है प्राइस देखेंगे, मार्केट्स को देखेंगे, टेक्निकल एनालिसिस देखेंगे क्योंकि इस वक्त बहुत ही ज़्यादा वॉलेटिलिटी है, बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे हो रहे हैं प्राइसेस। क्यों हो रहे हैं, क्या वजह है, उसकी क्या न्यूज़ है और किस तरफ जा सकते हैं शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, मिड टर्म में प्राइसेस। चलिए देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। All right. So what happened this morning is just a few minutes ago that Bitcoin jumped all the way to 44, 400, 500 range and then dropped tremendously. Let's see a Bitcoin chart for today. It jumped, Bitcoin बहुत तेज़ी के साथ जंप किया और ये देखिए all the way to 44 300 range and then dropped right back and then trying to come back again twice. What is happening? All this volatility, should you be worried about it, or is it good for the market, or what is going on? Let's analyze. आप देख सकते हैं कि अब कितनी तेज़ी से मार्केट जो है ऊपर नीचे हो रही है। काफ़ी लंबा ड्रॉप आया, काफ़ी ऊपर एकदम तेज़ी से गया और फिर एकदम से लंबा ड्रॉप भी आया। तो हम इसको टेक्निकली एनालाइज करते हैं, लेकिन ये एकदम जंप जो आया, पीक जो एकदम से ऊपर जो गया है, उसकी एक वजह जो है ये न्यूज़ है। दिस इज़ द न्यूज़ दैट वी हैव thereafter yesterday's inflation rate that it increased to 7% in USA. The dollar start dropping tremendously against all other currencies. Um, so this morning the trend continues also. So this is not a good sign. If the dollar is dropping, then everybody is jumping towards some hedge against the dollar, and many people think right now that Bitcoin is the hedge against the US dollar for that inflation numbers and the dropping value of dollar right now. तो डॉलर की जो वैल्यू है वो तेज़ी के साथ गिरी है। कल की न्यूज़ के बाद इन्फ्लेशन जब बढ़ी है तो उसकी न्यूज़ कंफर्म हुई कि 7% इन्फ्लेशन यूएस में बढ़ गया है पिछले महीने टोटल एवरेज, तो वहाँ तक पहुँच गया है। तो हम जो रहते हैं यूएस में वो जानते हैं कि इट इज़ वेरी बैड राइट नाउ। हर चीज़ एक्सपेंसिव है, वेरी एवरीथिंग इज़ एक्सपेंसिव। सो right now it's not I mean, everybody, it's not a hidden truth, everybody knows about it. The inflation is growing on us tremendously. So this confirms that people are running towards the hedges against the dollar right now, and one of the thing they see is Bitcoin. So let's analyze what's going on. This is the 4-hour chart that I'm looking at with a lot of indicators on it. So I will explain you one by one all these indicators, what they're showing us. So this morning, just maybe an hour ago or so, this last 4-hour hourly candle is amazing, tremendously. Let me blow it up a little bit so you can see what happened this morning and what's happening right now. Yeah. So I have been talking about this trend that we are very nicely, you can see at the background all these lines, vertical lines that you see, blue and yellow, these are VPVR, and there's a hill kind of structure. You can see that we are on this side of the hill, like we are dropping right here. So if we are dropping this way, it means that the price is increasing, price is rising gradually. You can see that they were rising up till this point when they start dropping last night. And I told you guys, if you अगर आपने देखा होता, if you have watched my videos, last couple of videos,
you must have noticed that I've been telling about it, that price can dip down very sharply, very quickly, and maybe go on. Maybe they will go up to like 38, $37,000 range. And this big volatility that we are seeing, that just a couple of hours ago or an hour ago, the price went up all the way up to 44 500 range, and then dropped tremendously within 4 hour range. So we that creates a big shadow towards the upside. That shows that the bulls tried to go up beyond this hill area into this the valley area. Once that they are in the valley area, then there's a good chance that they start climbing the next hill up here, which has a top target, the peak target of $47,000. So there was a good chance that once we broke above this level, 44 500 level, the next it will be very easy to start climbing up, to reach up to 46,000 and start climbing up towards the $47,000 range. So it was a good signal in this morning when it started happening. But then suddenly what happened is bears took control, bear came back, and then they start suppressing prices. And then the prices drop back down again, uh, just right above the 20-day moving average. That is the line in the middle of Bollinger Bands, shows that is a 20-day simple moving average line. तो यहाँ पर 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज पे भी स्टे कर रहा है बिटकॉइन all the way. It went up to the peak of these Bollinger Bands and came back right back up. So these kind of volatility is actually good for the market. If you have these big swings, then we can imagine that the bigger swing is on its way. All the other indicators, everything, even right now, if you look at the RSI, we are in the bullish territory. We are at 54 for the RSI. So we are in the bullish territory right now in the RSI. The only thing that we are looking is to for the money flow, the volume that should come in the market. Right now there is no green money flow right here. You can see that it has been dried out for a long time, and still the money is waiting at the sidelines. While the price is moving so fast, there is a chance that anytime, because that is the right time that people might have been thinking to FOMO back in, and especially if they start looking at prices climbing up to this hill. Many investors are waiting for that climb, and if that would have happened, if the and it can still happen right now, because the dip that I have been predicting is already happened, and nobody knows where the bottom is right now for this dip. If it's already bottomed out with this candle, or is it coming back now, or it may go further down. If it happens, we'll see. But right now the sentiments are that if the dollars are getting weaker, and the inflation is going higher, the only hedge against that people are looking at towards the Bitcoin. So if the Bitcoin and the crypto markets have to flourish, this is the time. This is their chance. This is their chance to prove that they are the hedge against gold, against inflation, against falling value of the dollar, of the fiat currency. That is the right time for the cryptocurrencies to shine, actually, and that's what I think. That's what is going to happen now. Uh, Again, within a few minutes, few hours, maybe a day or two maximum, we will see those price actions. We will see that the volatility will come back. This is a good thing that Bitcoin prices and the market, the crypto markets bounce up and down so quickly. That shows that there's a volatility coming back in the market, and this is good. It will help Bitcoin to slingshot where it needs to be right now. It's already into a very sold out condition, very oversold condition. So the next thing we are anticipating that it will bounce back very hard, very quick, um, and um, and always if you look back all the rallies going up,
it was never a straight shot up. It was always a little bit up and down, and then towards and the trajectory is towards the upside. That's what I see. The more it dips right now here, the more quickly it will go up, and the harder it will go up. So it was good that it reaches to 44,500 level, but then it is also good that it dips right back, right here. So it is creating more volatility in the market. It's a healthy thing, but it has to come back very quickly too, which is it is trying right now. That the red candle that we formed, kind of a shooting star candle, and then the next candle and the next candle are very important. That's what I'm going to see. I'm going to watch. I'm watching right now with you guys. That's what the title is. That we are analyzing these prices together. So stay tuned. I'll come back for other technical analysis after I explain this situation in Urdu to my Urdu audience. तो इस वक्त हो क्या रहा है कि मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन चल रहा है, ऊपर नीचे हो रही है मार्केट. जो न्यूज़ कल से आ रही हैं उसको रिएक्ट कर रही है मार्केट. कल इन्फ्लेशन के नंबर्स आए, कुछ लोगों के हिसाब से अच्छे नंबर्स थे, कुछ लोगों के हिसाब से ख़राब नंबर्स थे. अच्छे नंबर किस तरह से थे कि जो एंटिसिपेटेड था कि जितना इन्फ्लेशन है और जो लोग रह रहे हैं यूएस में, दुनिया भर में सब जानते हैं कि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, और उसकी वजह है इतनी ज़्यादा मनी प्रिंटिंग चल रही है, इतनी ज़्यादा जो है डॉलर्स को प्रिंट किया है. दुनिया भर में हर करेंसी प्रिंट हो रही है ताकि लोगों की मदद किया है, हेल्प आउट किया है लोगों को पेंडेमिक से निपटने के लिए. तो उस सिचुएशन में देखिए इन्फ्लेशन को बढ़ना ही था और वो बढ़ रही है. तो ये नंबर्स एक्सपेक्टेड थे, बहुत ज़्यादा जो एक्सपेक्टेशन से ऊपर नीचे नहीं हुए, तो एक इट वाज अ गुड थिंग. तो कल से मार्केट जो है रैली करने शुरू की, ऊपर आना शुरू किया मार्केट ने उस न्यूज़ के ऊपर. फिर आज सुबह रैली की मार्केट, एकदम से भी कुछ घंटे पहले एकदम से 44,500 तक चला गया बिटकॉइन. क्योंकि एक कंटिन्यूटी थी कल से, जो डॉलर की वैल्यू थी वो जो है वो तेज़ी से गिरना शुरू हुई दूसरी दुनिया की करेंसीज के मुकाबले में, और आज भी सुबह वो गिरती जा रही है वैल्यू उसकी डॉलर की. तो उस चीज़ को इस तरह लोगों ने फिर इस तरह से एंटिसिपेट किया कि डॉलर हाथ में रखने का वो फ़ायदा नहीं है, फिर उसको कहीं ना कहीं उसके इन्वेस्ट किया जाए जहाँ पर वो अपनी वैल्यू को होल्ड कर सके, उनकी वेल्थ. पहले ज़माने में होता यह था कि गोल्ड जो था एक अच्छा हैज समझा जाता था, और वहाँ पर पैसा रख दिया जाता था, गोल्ड में पार्क कर दिया जाता था इस तरह की सिचुएशन में जब इन्फ्लेशन हाई आ रही होती थी. अब जो है वो डिजिटल गोल्ड हमारे पास है, जो कि बिटकॉइन है या क्रिप्टो करेंसीज हैं. तो उसमें लोगों का इंटरेस्ट हमने एकदम से देखा कि आज सुबह बढ़ा, और वो उस न्यूज़ पे एकदम से ऊपर की तरफ जंप किया उसने, बिटकॉइन के प्राइसेस और दूसरे क्रिप्टो करेंसी मार्केट ने भी. लेकिन फिर उसके बाद एकदम से हमने सडन ड्रॉप भी देखा, जो कि पिछले अगर 4 आवर की कैंडल हमारे पास मौजूद है यहाँ पर, उसको हम देख सकते हैं कि शूटिंग स्टार कैंडल कहलाती है. इसका अपर शेडो काफ़ी लॉन्ग है, ये गई पूरी ऊपर तक 44,500 तक, एकदम से फिर ड्रॉप किया नीचे की तरफ, और नीचे ऑलमोस्ट 42,800-900 तक चली गई. तो ये शूटिंग स्टार कैंडल फॉर्म की, जो कि रेड है. तो अब जो नेक्स्ट कैंडल चल रही है करंटली, वो ग्रीन और रेड. ग्रीन बहुत ही मामूली सी ग्रीन है, लेकिन कोशिश उसकी यही है कि वो ऊपर की तरफ बुल्स जो हैं उसको खींचने की कोशिश कर रहे हैं. तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट कैंडल है, इसको हमें देखना होगा कि कहाँ पर एंड होती है 4 घंटे की कैंडल. तो इस वक्त बिल्कुल न्यूट्रल किस्म की है, ऊपर भी एक उसमें शेडो है छोटा सा, नीचे भी शेडो है छोटा सा, और बीच में एक छोटी सी बॉडी है उसकी, जो कि ग्रीन है इस वक्त. लेट्स सी कि वो ग्रीन रहती है और मज़ीद अपने आप को एक्सटेंड करती है नहीं. आप देख सकते हैं तो करंटली राइट नाउ कितनी ज़्यादा उसमें कशमकश चल रही है, बहुत ज़्यादा बिल्कुल बारीक सी उसकी बॉडी है, और ऊपर नीचे हो रही है जब हम बात कर रहे हैं. तो इस वक्त बिल्कुल अनडिसाइडेड प्राइस एक्शन है. लेकिन जितना ज़्यादा वॉलेटिलिटी हो रही है, जितना ऊपर गया जितनी तेज़ी से नीचे आया, तो मार्केट के लिए अच्छा होता है ये चीज़ कि प्राइसेस को जिस तरफ जाना है वहाँ तेज़ी के साथ फिर जाते हैं, जितनी ज़्यादा वॉलेटिलिटी है इस तरह की आती है. तो और हम सब जानते हैं कि जो करंट सिनेरियो बन रहा है, जो जिस तरह की न्यूज़ आ रही हैं, उसमें जो है बिटकॉइन के प्राइसेस को और क्रिप्टो के प्राइसेस को ऊपर ही जाना है.
और ये काफ़ी ओवरसोल्ड टेरिटरी में ऑलरेडी आ चुका है। RSI तो बुलिश है नो डाउट, 53 पे 54 पे मौजूद है, तो वो बुलिश टेरिटरी के अंदर है। तो ये हमें ऊपर की तरफ लेके जा सकती है। ये इंडिकेटर है इस चीज़ का कि अगले आने वाले घंटे चंद घंटे जो हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। सेंटिमेंट्स यही हैं, जो टेक्निकल इंडिकेटर्स हैं वो यही कह रहे हैं कि नो डाउट के वक्त हम रेड डॉट के अंदर हैं, और ये जो रेड डॉट है ज़बरदस्त तरीके से प्ले आउट कर रहा है। अब तक ग्रीन डॉट नहीं आया है यहाँ पर, लेकिन एंटिसिपेट ये किसी वक्त भी ग्रीन डॉट आके और एक बहुत बड़ा प्राइस एक्शन हम देख सकते हैं यहाँ पर। उसके लिए ज़रूरी होगा कि वॉल्यूम वापस आए, पैसा वापस आए मार्केट के अंदर, और लोग जो हैं वो कॉन्फिडेंस फील करें। ये कॉन्फिडेंस लेवल यहाँ पर देख रहे हैं हम डिप कर रहे हैं, ये वापस आना चाहिए, ये ग्रीन टेरिटरी में आना चाहिए वापस कॉन्फिडेंस लेवल। जब ये ऊपर की तरफ आएगा, कॉन्फिडेंस वॉल्यूम बढ़ेगा, तो डेफिनेटली हम देखेंगे कि यहाँ पर ग्रीन डॉट आया है, और किसी वक्त भी वो प्रिंट हो सकता है ग्रीन डॉट, और वो फिर इसको मार्केट को ऊपर की तरफ प्राइस को पुश करेगा। हम जहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं, VPVR की जो ये इमारतें नज़र आ रही हैं आपको, ये एक पहाड़ी है, इसके बिल्कुल इस तरफ मौजूद है। यहाँ से एकदम क्विकली नीचे की तरफ एक बॉल जो है रोल कर सकती है, जो कि की भी हमने देखा कि बहुत क्विकली स्पीड के साथ बॉल रोल किया और फिर वापस भी रोल बैक भी किया। तो अगर ये यहाँ इस चीज़ को 44 से ऊपर जाके दोबारा और उस 44,500 को रिस्ट्रेन करता है और इस वैली के अंदर रहता है, तो इससे अच्छे चांसेस होंगे फिर जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो मौजूद है यहाँ पर 47,000 पे, इसके ऊपर जाए फिर ये, और इसको अबूर करने की कोशिश करे। ये सारी चीज़ें भी डेवलपिंग स्टोरीज़ हैं। आगे क्या होगा, जैसे कि मैं एंटिसिपेट कर सकता हूँ इस वक्त जो न्यूज़ हैं और जो व्यूज़ हैं लोगों के, और जो जो मार्केट सेंटिमेंट्स हैं, और जो जो टेक्निकल इंडिकेटर्स आप बता रहे हैं, उनको देखते हुए मैं एंटिसिपेट कर सकता हूँ कि मार्केट बहुत तेज़ी के साथ ऊपर आने वाली है किसी भी वक्त, एनी टाइम। इस वक्त मार्केट्स के अंदर जो है वो ट्रेडिंग करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आप सोचिए कि अगर विद इन फ्यू मिनट्स जितनी तेज़ी से ऊपर जा सकती है मार्केट और नीचे भी आ रही है, तो आप बहुत क्विकली मनी लूज़ कर जाएंगे। इस वक्त तो सिर्फ जो आप कर सकते हो कि होल्ड कर सकते हैं आप, जो भी आपकी इन्वेस्टमेंट्स हैं उनको होल्ड करके रखें, सेलिंग और बाइंग से इज्तनाब करें, लेवरेज ट्रेडिंग से इज्तनाब करें। बहुत तेज़ी के साथ जो है आप ब्रैक हो सकते हैं अगर लेवरेज ट्रेडिंग करने की कोशिश करेंगे इस मार्केट में, ख़ास तौर पे जो इतनी तेज़ी से मूव कर रही है ऊपर नीचे। नोबडी नोज़, किसी को नहीं पता कि अगले आने वाले मिनट्स आवर्स में जो है मार्केट्स कहाँ होगी। चांसेस हैं कि ऊपर जाएगी, लेकिन गारंटी किसी चीज़ की नहीं है, कोई नहीं दे सकता गारंटी इस चीज़ की कि मार्केट जो है वो ऊपर ही जाएगी, ऊपर की तरफ ही जाएगी। नीचे भी गिर सकती है। मैंने कल 2 दिन से मैं आपको बता रहा हूँ, जबकि मार्केट्स मुसलसल ऊपर की तरफ ट्रेंड कर रही थी, मैं आपको बता रहा था कि मार्केट नीचे गिर सकती हैं, और गिरी मार्केट नीचे आपने देखा। लेकिन इस वक्त मैं थोड़ा सा इस वक्त अनडिसाइडेड है मार्केट भी, और मैं भी अनडिसाइडेड हूँ एक तरह से कि मार्केट 100% नहीं कह सकते किसी भी बात पे हम श्योरिटी के साथ कि मार्केट्स कहाँ जाएंगी, लेकिन मेरी गट फीलिंग कह रही है, और जो इंडिकेटर्स मुझे नज़र आ रहे हैं वो यही हैं कि किसी भी वक्त यहाँ पर ग्रीन डॉट प्रिंट करके और मार्केट तेज़ी के साथ ऊपर निकलेगी, तेज़ी के साथ आज दोपहर में मोस्ट लाइकली। तो वॉच आउट फॉर दैट एक्शन। जब हम बात कर रहे हैं, हमारे बात करते करते जो है मार्केट देखिए ऊपर की तरफ वापस आ रही है, और किस तरीके से ग्रीन कैंडल जो है ये फॉर्म कर रही है। अभी थोड़ी देर पहले रेड थी तो अभी ग्रीन हुई है। तो ये कहाँ क्लोज होती है बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको देखना होगा हमें कि किस तरफ ये जो है क्लोज हो रही है। अगर मैं कैंडल्स को हाइकेनाशी कैंडल्स का रूप दूँ, तो हमें क्लियरली जो है हाइकेनाशी तो हमें नीचे की तरफ ही ट्रेंड करता हुआ दिखा रहा है। तो हाइकेनाशी कैंडल नीचे की तरफ ट्रेंड करता हुआ दिखा रही हैं, जो कि क्वाइट पॉसिबल है कि अगले चंद घंटों में मज़ीद और नीचे की तरफ हम प्राइस एक्शन देख सकते हैं। लेकिन एज आई सेड इज़ अनडिसाइड, कोई नो बडी नो एनी बडी इज़ गैस। अगर हम टेक्निकल इंडिकेटर्स की बात करें तो टेक्निकल इंडिकेटर्स सारे बुलिश हैं काफ़ी। मैकडी भी ग्रीन है, नो डाउट कि उसने अपना कलर चेंज किया और बहुत छोटी कैंडल्स हो गई हैं उसकी मैकडी की। किसी वक्त भी क्रॉस कर सकता है और रेड टेरिटरी के अंदर आ सकता है। इसी तरीके से अगर हम 4 आवर के मोमेंटम वेव को देखें तो इसमें अभी तक जो है वो रेड डॉट ही यहाँ पर आया हुआ है, और उसके बाद रेड डॉट के बाद जो है वो नीचे ही की तरफ मार्केट पॉइंट कर रही है, सिवाय
पिछले 1 घंटे के, जब मार्केट ने तेज़ी के साथ ऊपर आके कोशिश की ऊपर जाने की, और फिर उसके बाद जो है वो डंप किया वहाँ से उसने। लेकिन उसके बाद फिर जो करंट जो कैंडल है हमारी, जो 4 आवर की, वो ग्रीन फॉर्म करने की कोशिश कर रही है और ऊपर आने की कोशिश कर रही है बहुत तेज़ी, मतलब बहुत तेज़ी से तो नहीं कहूँगा, जितनी तेज़ी से ये एक्शन हुआ है उस तरह से नहीं हो रहा, लेकिन स्टिल काफ़ी अच्छा प्राइस एक्शन नज़र आ रहा है इस वक्त हमें, जो कि आहिस्ता आहिस्ता बिल्ड कर सकता है वापस मोमेंटम ऊपर की तरफ। दैट्स व्हाट आई सी, कि ये 60% चांस मैं कहूँगा कि इस चीज़ के लिए लग रहा है मुझे कि ये ऊपर की तरफ मोमेंटम जो है इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता बिल्ड करेगा, और वापस हम इस हिल एरिया के अंदर आके और फिर वापस यहाँ चढ़ने की कोशिश करेंगे $47,000 को टच करने के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है 47,000 का। बिटकॉइन को इसको क्रॉस करना बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत तेज़ी के साथ, अगर ये कंटिन्यू करना चाहता है बुल रन। तो अगर हम ओवरऑल अगर हम जूम आउट करके थोड़ा सा ओवरऑल देखें तो आपको क्लियर पैटर्न नज़र आएगा एक यू टर्न रिकवरी का। नीचे गिरा है प्राइस ज़रूर गिरे हैं, लेकिन फिर यू टर्न रिकवरी की तरफ जा रहा है। तो वी शेप रिकवरी नहीं है, बेसिकली यू टर्न रिकवरी। वी शेप रिकवरी वो होती है अगर जैसे ही गिरा था प्राइस और तेज़ी के साथ ऊपर आया था, तो वापस तेज़ी के साथ तो नहीं आ रहे हैं प्राइसेस, लेकिन यस आई कैन सी दैट इट्स अ यू टर्न रिकवरी है। तो ये इस वक्त अगर हम जैसे मैंने कहा कि हम प्राइसेस का इंतज़ार करेंगे अभी हम, और मोस्ट लाइकली हो सकता है आज दोपहर में भी मैं एक और लाइव स्ट्रीम करूँ आप लोगों को अपडेट करने के लिए कि ये 4 आवरली कैंडल किस तरह से प्ले आउट की, क्या इसने प्रिंट किया, और आगे किस तरफ मार्केट्स जा रही हैं, प्राइसेस किस तरफ जा रहे हैं, उसको दोबारा एनालाइज करेंगे। मे बी नेक्स्ट 4 आवर के बाद मैं दोबारा लाइव स्ट्रीम करूँगा। तो स्टे ट्यून फॉर दैट, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, लाइक कीजिए मेरी वीडियोस को। हम लाइव इस तरीके से प्राइसेस को एनालाइज करेंगे, ख़ास तौर पे जब इतनी ज़्यादा वॉलीटिलिटी और इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग चल रही है मार्केट्स में, तो हम डेफिनेटली इसको लाइव एनालाइज करेंगे आपके साथ बिल्कुल। इस पहले से कोई कंटेंट प्रिपेयर नहीं है, इसके जैसे जैसे मार्केट्स मूव कर रही हैं हम उसको आपके साथ उसी वक्त देख रहे हैं, और कोशिश कर रहे हैं जानने की कि किस तरफ मार्केट जा सकती हैं। इस वक्त जो नज़र आ रहा है वो यही है कि मार्केट्स में थोड़ी सी वॉलेटिलिटी आई है। इस वक्त भी हम 20 मूविंग एवरेज जो है उसके ऊपर बैठे हैं, यानी बुलिश है। नीचे RSI में अगर देखें हम 4 आवर पे, तो वहाँ भी हम बुलिश हैं, 54 पे 55 ऑलमोस्ट हम बैठे हैं। इस वक्त हम बुलिश कंडीशन में हैं। सिर्फ हमें यहाँ पर थोड़ा पैसा का वॉल्यूम चाहिए कि वापस आए, पैसा मार्केट में वापस आए, ताकि इसको पुश किया जा सके प्राइसेस को और उस डायरेक्शन में जिस तरफ ये जाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि ऊपर की डायरेक्शन है डेफिनेटली। तो 60 से 70% मेरा जो मानना है वो ये है कि मार्केट जब हम नेक्स्ट लाइव स्ट्रीम करेंगे तो हम इससे ऊपर बैठे होंगे, मार्केट्स ऊपर आ रही होंगी तेज़ी के साथ, और हम उसको एनालाइज करेंगे। किसी वक्त भी ऐसा होता है तो आई विल कम बैक। तो बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा शेयर के साथ साथ, ताकि आपको जो है फौरी तौर पे लाइव जो है डेटा फराहम कर सकूँ, लाइव इंफॉर्मेशन दे सकूँ आपको नेक्स्ट में भी 3 to 4 आवर्स के अंदर। तो ये मेरा एनालिसिस है। बाकी पूरी मार्केट भी सेम डिपिक्ट कर रही है। जो बिटकॉइन के प्राइसेस हैं उसको ही शो कर रही है। तो कल के मुकाबले में अगर हम 24 आवर में देखें तो कोई ख़ास वॉल्यूम में चेंज, मतलब प्राइसेस में चेंज है। 0.3% सिर्फ डाउन यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं, और सब प्राइसेस का यही हाल है। 1% to 2% और विदिन 1% की रेंज में अंदर हैं सब। कुछ थोड़े से 1-2% ज़्यादा बढ़े हुए हैं, 1-2% कुछ नीचे हैं। बहुत ज़्यादा बिग गेनर्स हमें उसमें टेरा लूना 4%, 5% बढ़ा हुआ है। डॉज कॉइन 4% बढ़ा हुआ है। और कोई मतलब कोई इतना ऐसा नहीं है एब्रप्टली कोई बहुत ज़्यादा आउट ऑफ द ब्लू जंप किया किसी ने। So that's it. I think for now we'll take a break and maybe come back. I'll come back in 3 to 4 hours when I'll have much clear price action. Right now it's kind of coming back up again after this abrupt up and down movement, and then it's trying to come up again. But we'll see if it gradually comes up or will it make another leg up, quick leg up.
We'll see in next 2 3 hours. I'll come back and discuss with you guys. Till then, goodbye. Assalamu alaikum.